Namaste, welcome to the maths section of the online batch. And सबसे पहले वो मीम एक आती है इमरान खान की कि आपने डरना घबराना नहीं है. Do not worry about maths at all. I will try to simplify it as much as possible. Now, this lecture will be a very basic lecture. This is what I call as a setup lecture. So this will set up the concept for you, and then eventually in a couple of lectures we will reach the level that is being asked in the CUETPG/DULLB level, and the number of and we'll try to cover out all topics by covering out the basics, and then you will practice out the questions maybe from R.S. Agarwal, R.D. Sharma, whatever it is. I need you to practice around 50 questions each per topic. Right, and that will strengthen out the topic, and even past years ke andar more than enough questions are there. Now, a number of students, once you're watching this lecture, will be like, "Yare, ye to bahut zyada simple hai." Yes, this is a setup lecture. I am presuming that you don't know maths at all, and this is a standard joke as well कि काफी वकीलों की maths खराब होती है. ऐसा partially true है, but partially not completely true for sure. तो अगर आपको मैथ से घबराहट वगैरह है, प्लीज डरना घबराना नहीं. Alright, we are going to be starting off with ratios, then we are going to get into unit rates, then we are going to get into proportions, we are going to get into percentage discount, simple interest, compound interest, all जो सारी जो गंगा बहती है वो इस टॉपिक का नाम है रेशियो, यहाँ से बहती है. Alright, so what is a ratio? First and foremost, we are going back to your छठी सातवीं आठवीं कक्षा. It is a comparison of two or more quantities. So for example, let us say that here 2 glasses, 1 pen. अगर ratio of pen is to glasses पूछूं तो 1 ratio 2. It is as simple as that. So there is 1 pen and then there are 2 glasses. Alright, so that is simply what we call as a ratio. Ratio is always a comparison of 2 or more quantities, but mostly we'll confine ourselves to 2 क्योंकि हमारी लॉ एंट्रेंसेस में 2 से काम चलता है. हमने कोई 12वीं की एडवांस्ड मैथ्स नहीं करनी, बट जो बेसिक है, these are very very easy marks to score. We cannot afford to leave them out. Alright, now go along with me. You can keep on pausing the lecture, keep on resuming the lecture. When I tell you what will be the answer, try to first solve it yourself, and then you can always play it back. What is the ratio of the red circles to the purple circles? Hopefully this is being shown as purple to you on the screen. So this is the red circle, this is the purple circle. कितने हैं जी? 1, 2, 3, 4 and 5 and 1, 2, 3, 4. अब इसके 3 फॉर्मेट है. How we can write the same very thing in 3 ways. It is pretty much the same thing, but the form of expression is slightly different, but it is the same thing. Alright, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे मुझे आंसर लिखना है. So A to B, A पहली क्वांटिटी है. Remember, this is all about quantities and this is all about comparisons. पहले कितने थे जी? 5. And what were these? 4. 5 to 4. अब कई मैथ्स टीचर स्कूल में होते हैं 5:4 भी बोलती हैं, तो कोई बात नहीं, बट वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग 5 to 4. ऑलराइट, अच्छा 5:4 इसको वैसे बोला जाता है A:B. यहाँ पे 5 लिखता हूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ. इट इज एज सिंपल एज दैट. एंड A/B. अब यहाँ पे डिविजन नहीं है, डिविजन नहीं है भैया, ये डिविजन. अब यहाँ पे लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 5, इफ आई राइट 4, ग्रेट, दिस इज अ रेशियो. अब इसको आपने बैठ के डिवाइड नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल वी वांट एन इक्विवेलेंट रेशियो जिसमें हम 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट के अंदर हम वहां पे पहुंचे. बट डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज दिस? मतलब ये लिख तो दिया 5 to 4, 5:4, 5/4. मतलब क्या चक्कर क्या है? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस मीन देयर इज 5 क्वांटिटी, 5 ऑफ समथिंग और 5 ऑफ A, and we are comparing. So in the overall picture we are saying कि भैया ये 5 है. So in the total overall picture we are saying ये 5 है तो ये 4 है. It is as simple as that. Total 9 है. 5 red, 4 purple. So that makes it total number of circles is 9. But उसमें से जो split है, we are comparing 2 quantities, one quantity to the other quantity.
All right, hopefully this is clear, because this is the very fundamental of the kind of questions that they keep on asking in the maths section. All right, and I am starting with this because I'm presuming that you don't know anything. So even if you know this, great. I am talking to those and I'm teaching with the presumption that you don't know anything, and I'm starting from the very ABCD, the very G's of maths. All right, let's go here. Now, थोड़े से अब रेशियो डिराइव आउट करना शुरू करते हैं, सो दैट वी कम क्लोजर टू आवर एग्जाम लेवल. नाउ दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज नॉट एग्जाम लेवल, बट द मोमेंट वी आर एबल टू डिराइव आउट रेशियोज फ्रॉम स्टेटमेंट्स, वी आर क्लोजर टू आवर एग्जाम. 13 students joined TLOI's batch in January 23. Hopefully it is 130, but ठीक है 13 कर लेते हैं. 13 students joined TLOI's batch in January 2023. 8 joined the DULLB batch. 5 joined the NLSAT batch. कुछ कम ही लिख दिया है मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, hopefully बढ़ जाए. 8 joined the DULLB batch. 5 joined the NLSAT batch. What is the ratio of students who joined the DULLB batch to students who joined the NLSAT batch? Total 13 है. I am asking you, what is the ratio of the students? Now again, ratio is a comparison of quantities, right? So comparison of the number of students. Ratio of the students who joined the DULLB batch to the students who joined the NLSAT batch. अब इसका आंसर क्या है? So 8 joined the DULLB batch, great. 5 joined the NLSAT batch. It's as simple as that. अच्छा, दूसरा तरीका इसी सेम बात को लिखने का, तीसरा तरीका इसी सेम बात को लिखने का. बात एक ही है, एक्सप्रेशन अलग अलग है. It is as simple as that. Hopefully अभी तक you are following me and hopefully you have written this in your जो शीट है या नोटबुक है, जो भी है आपके पास. Hopefully you have written this. Okay, great. Another way to say this is, and this is what they usually give you in an exam. For every 5 students who joined the NLSAT batch, 8 joined the DULLB batch. दोबारा रिपीट करते हैं. For every 5 students, जब 5 लोगों ने NLSAT batch ज्वाइन करा, उनके अगेंस्ट या उनके खिलाफ या उनके कंपैरिजन में 8 स्टूडेंट्स ने DULLB का बैच ज्वाइन करा. ठीक है जी, तो यही तो बोला था. अब ऐसी कोई स्टेटमेंट आए फॉर एवरी 5 स्टूडेंट्स who joined, yeah, for every 5 apples there are 7 blueberries, or some stuff like that, you must identify that the examiner is talking about a ratio and extract the damn ratio out of that word statement that is given to you. ठीक है जी, hopefully this is clear, hopefully this makes sense, hopefully there is no problem. Alright, अगर कोई प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में, कृपया करके थोड़ा सा रिवाइंड करें लेक्चर को, एंड देन वी मूव अहेड. What is the ratio of students who joined the NLSAT batch to those who joined TLOI? दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं. What is the ratio of students who joined the NLSAT batch to those who joined TLOI? जनवरी में कितने TLOI को ज्वाइन करे थे? कितनों ने? 13, राइट? अच्छा, थोड़ी आगे अगर मैं देख लेता हूँ, जगह आगे मैंने छोड़ी नहीं है, तो यहीं पे आंसर करना पड़ेगा. अब बुला लेते हैं जी इनको वापस, एज यूजुअल इट कीप्स ऑन स्लाइडिंग अवे. व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु जॉइंड द NLSAT बैच? NLSAT बैच भैया कितनों ने ज्वाइन करा है? 5. टू दोज हु जॉइन TLOI. नाउ रिमेंबर अगेन, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज, इजंट इट? वी आर गोइंग टू बी कंपेयरिंग who? The number of students who joined the NLSAT batch to the total overall number who joined TLOI. I believe this is damn simple. पहले 8 क्यों था? Because we were talking about the DULLB batch, and remember, in a ratio we are comparing. I'll keep on repeating the point, and I keep on repeating the points till the time that the concept gets drilled into your head. Alrighty then. Now we go to simplifying ratios. Right? Now we go to टॉपिक सिंप्लीफाइंग है, बट दिस इज नाउ रेशियो स्टेप 2 और स्टेज 2. होपफुली अभी तक समझ में आ गया, कंपैरिजन सब कुछ समझ में आ गया. ठीक है जी. नाउ व्हाट इज सिंप्लीफाइंग रेशियो? सिंप्लीफाइंग रेशियोज इज
अब वी आर गोइंग टू गेट देम टू देयर बेस फॉर्म. अगर कोई चीज डिवाइड हो सकती है, वी आर गोइंग टू बी डिवाइडिंग इट एंड गेटिंग द रेशियो बैक टू इट्स बेस फॉर्म. इफ यू आर कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. धीरे धीरे आराम आराम से सुनते चलिएगा. Courtroom makes a beaded necklace. Great. And uses 12 beads in total. Great. Okay. So you're using 12 beads. तो ऐसे वो beads वाला necklace और जैसे बच्चे खिलौने वाले आते हैं. 12 beads total are being used to make the necklace. 12 bead use किए गए. 3 are purple, 6 are green. Hopefully ये black नहीं है, ये green है. I think वो board के contrast से ये black. I've used green color, but I don't think that will be visible on the camera. ये पर्पल तो विजिबल हो रहा होगा, ये रेड भी विजिबल हो रहा होगा, ये ग्रीन कलर. तो कितने हो गए जी? 6 ग्रीन. 1 2 3 4 5 6. ग्रेट. 3 आर पर्पल. 1 2 एंड 3 आर पर्पल एंड द रेस्ट आर ऑफ कोर्स दे आर रेड बिकॉज 12 बीड्स टोटल बता दिए गए थे. तो 1 2 और 3 आर रेड एज वेल. लेकिन ये क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं. दिस यू कैन बैक कैलकुलेट वेरी वेरी इजिली. ओके. What is the ratio of purple beads to green beads? So how many are purple? 3 are purple, 6 are green. Great. 3:6 या 3/6 ये भी है, यही है. बट अब हमने इसको और सिंपल करना है. 3 2 कितना होता है? 6 होता है. और 3 1 तो 1 ही होता है. सिंप्लीफाइड वर्जन इज 1:2 या 1/2. क्यों? क्योंकि आपने जो लोएस्ट, बेसिकली जिस भी चीज से आप डिवाइड करके इसको इसके लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं वो आप ले आएंगे. 1:2 is equal to 3:6. It is the same thing. We have just reduced, you can say, reduced it to its base level form. So जब हम कह रहे हैं 3:6 meaning there are 3 purple beads, तो वो तो उन्होंने बता ही दिए थे. There were 3 purple beads and there were 6 green beads. Great. लेकिन ये जो हमने जो सिंप्लीफाई करा है ना, ये जो सिंप्लीफाई करा है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं इसको, तो फॉर एवरी कितने पर्पल बीड? 1 पर्पल बीड देयर आर 2 ग्रीन बीड्स. फॉर एवरी 1 पर्पल बीड देयर आर 2 ग्रीन बीड्स. इफ आई लुक यहां से, अच्छा ये वाला पर्पल बीड हो गया, इसके साथ में ये 2 जुड़ गए. ठीक है जी. फॉर एवरी 1 देयर आर 2 ग्रीन बीड्स. For every 1 purple bead, there are 2 green beads. For every 1 purple bead, 2 green beads. हो गया ना? काम हुआ कि नहीं हुआ? That is what a simplifying the ratio is. Alright. So अगर कोई रेशियो बता रखे हैं 2/4, तो कितना हो गया? यूजुअली आपके एग्जाम के लेवल से 2 के साथ ही डिवीजन हो रही होगी या 2 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी. ठीक है जी. Hopefully the statement is clear. What is the ratio of purple beads to green beads? 3:6. And then simplifying it, it is 1:2. That is, for 1 purple bead, there are 2 green beads. In total, what is the ratio of 3? What is the ratio of purple beads? That is 3 purple beads. सामने खड़े हैं 6 green beads. तो एक purple bead के लिए कितने खड़े हो गए? 2. In essence, बात एक ही है. 3:6 is the grander overall complete picture. But the source, the beej or the root is 1:2. Hopefully it is clear. And there are many equivalent ratios to this as well. Equivalent, अभी यही काम हमने करना है. ठीक है जी. What is the ratio of green beads to the total number of beads? Great. पहले जरा देख लेते हैं. What is the ratio of green beads to the total number of beads? कितने थे भाई साहब? 6 ग्रीन थे एंड टोटल कितने थे? There were 12 beads in total. Great, great. So let us यहाँ पे right. 6 were the green beads and 12 are total. ठीक है जी. और ये हो गया 6/12. अच्छा 6/12. 6 1 6, 6 2 12. अब ये सिंप्लीफाइड रेशियो है, तो सिंप्लीफाइड रेशियो की हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. So 1 out of every 2 beads is green. 1 out of every 2 beads is green. चेक भी कर लेते हैं जी. चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने थे. यहाँ से मैं जरा थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए आपको. 1 out of every 2 beads कितने हैं भाई साहब? टोटल कितने थे? 12 थे. 6 तो हरे ही थे.
6 तो हरे ही थे। टोटल 50% पॉपुलेशन ही है, एक तरह से कह सकते हैं 50% of the beads are green, that is what I can say as well, and 1/2 are green, pretty much the same thing. Out of, for every one bead used, so 1 out of every 2 beads is green, 1 bead out of every 2, out of every 2, अगर हम इसको पैसेज मतलब यहाँ पे ये वाले को हरा कर दें, 1 out of every 2 is green. Hopefully it is clear. तो यहाँ पे यूजली रेशियो, यहाँ पे जो ये यूजली जो रेशियो जो कराया जाता है दैट इज 6 out of 12 नहीं कभी लिखते, मतलब लिखते हैं but usually it is simplified and it goes down to 1/2. It is pretty much the same thing. All right, that brings me to my next subtopic, which is equivalent ratios. Now direct questions will not come कि जी equivalent ratio बता दो, इसका रेशियो एक्सप्रेशन नहीं, जब ये फंडा क्लियर हो जाएगा, so that I won't have to repeat this again and again when I'm teaching you percentages, simple interest, compound interest, percentage discounts, जो कि आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉस्ट प्राइस, मैं भी सब कुछ कराने वाला हूँ आपको, so that you know you are comprehensively prepared for the exam. All right, and equivalent ratios, so they have the same value, so you can multiply both a and b or divide a and b by any value except, well, 0 of course, and the ratio remains the same. 3/5 का रेशियो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/5 से. क्यों मल्टीप्लाई करना है? जस्ट बिकॉज वी कैन. 15/25. अच्छा जी, फिर 3 के टेबल में जाता हूँ. 3 के टेबल में क्या बचता है? 3 5s एंड अच्छा 5 से, सॉरी यहाँ पे 3 से नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा 5 से. 5 3s are 15. 5 5. Once you divide it, it goes back. So this is an equivalent ratio. So 15/25 is equivalent to 3/5. Great. But 3 ये एक नहीं, ये ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे. बहुत सारे कैसे बन जाएंगे? 3/5 के अंदर भाई मैंने क्या कहा equivalent ratios में? You can divide or multiply a and b by the same value except 0. So 3 2s are 6, 5 2s are 10. So 6/10 is actually in its base form. It is, if you simplify this, the answer will be 3/5. Then 3/5 में 6 multiply कर दो, 18/30. 3/5 में 40 multiply कर दो, you go to 120/200. इसका base form will remain 3/5. So this thing is equal to this, whether you write this or whether you write 3/5, it is pretty much the same damn thing. Alright, because it is an equivalent ratio. तो ये क्या यहाँ पे कहानी खत्म होगी? नहीं, जितने मर्जी मतलब endless ही बन जाएंगे in effect, in theory. Then we go to 18/24 का एक बारी practice out कर लेते हैं. 18 divided by 2, 24 divided by 2, 9/12. Now this can go even lower क्योंकि ये 3 के टेबल से जा रहा है, but हम अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं इसको. 18 divided by 3, 24 divided by 3, क्योंकि ऊपर हमने multiplication के example देखे थे, अब हम division के example देख रहे हैं. 18 divided by 6, 24 divided by 6, 3/4, right? अब अगर आप वैसे इसको देखेंगे, अगर आपको इसको वैसे बेस फॉर्म में लेके जाना है, so we want to simplify 18/24. Again, 18/24 is what? So 18 of some quantity compared to 24 of some quantity. If we go to 3 का table, 3 6 are 18 and 3 8 are 24. And now we go to the 2 का table. 2 का table 3 2s are 6 and 2 4s are 8. बेस फॉर्म इसका 3/4 है. तो अब आप you write 3/4, you write 6/8, you write 9/12, या you write 18/24, 18/24. It is the same damn thing, right? तो इसका basic, the simplified version is 3/4. इसका मतलब for every 3 of A, there are 4 of B. Now what is this A and B? For every 3 of kitab, one book, that I'll just get a book. For every 3 constitutions of India, there are 4 contract acts that I have. This is what it is. तो वो A, B कुछ भी हो सकता है. This just indicates a comparison of the quantity. I'll just pick my pen up. ठीक है जी? Okay, now we practice it out. Now we practice the stuff out. क्या क्या है? Write each ratio as a fraction and simplify. Okay. So we write, मेरे साथ साथ कर लीजिए.
do take a pen and paper out and just practice. Even if you know this all already, doesn't really matter. 2/4 क्या करूं? And simplify. ये जिनको नहीं समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने बस 2 से डिवाइड कर दिया है. 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया जी? 1. It is the same thing. 2:4 is equal to 1:2 in its essence, in its base form. So when I say there are 2 of constitutions and I have 4 contract acts in comparison, तो इसका मतलब for every 1 constitution I have 2 contract acts. That is what ratio really means. Alright, 3:5 तो 3/5. अब इसमें तो कोई डिविजन पॉसिबल है ही नहीं. 3:6 होता तो ये 1:2 बन जाता. Hopefully it is clear. अब यहाँ पे तो ये कुछ कटबट ही नहीं रहा. But 8/64 is equal to 8 8s are 64. This is 1/8, right? So we have simplified the ratio to its very base form. So when I write, let us say that I have 8 judgments of the Supreme Court to 64 judgments of the High Court, I am in effect saying for every 1 Supreme Court judgment, there are 8 High Court judgments. It is the same thing whether I say this or whether I say the statement. बस रूप अलग अलग है. Numerically, it remains the same. And all of these concepts are going to make a difference for you in the exam when you'll be solving those word problems, as long as these concepts are crystal clear. 5:30. Great. 5/30. 5 6 30. So for every 5, for example, pens, there are 30 rings that I have. That is what 5 to 30 is. Hopefully that is the case one day. But for every 1 pen, I have 6 rings. It is pretty much the same damn thing. Alright, it is the same thing. Hopefully this funda is clear. Do not get confused कि अरे ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है. नहीं भैया नहीं है. It is the same thing. I am numerically saying the same thing. If I say, like when we started with 2:4, कि मेरे पास 2 कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट है और मेरे पास 4 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट है, तो इसका मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट के लिए मेरे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही हैं. क्योंकि अगर फिर 2 कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई और हर एक के लिए मेरे पास 2 थी, तो एक की 2 और दूसरे की 4. It is as simple as that. So for every 100 laws, 25 were criminal laws. Compare the number of criminal laws to all laws. 25 is to 100. 25 4s are 4 2s are 8, 100. अगर मैं काटूं यहाँ पे 1:4. So for every one, अच्छा compare the number of criminal laws. तो criminal laws left पे लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, 25 यहाँ पे लिख दिया, and 100 laws is the total laws. तो यहाँ पे the ratio eventually is 1. So for every 1 criminal law, there are 4 total number of laws. All right. So hopefully this is clear. This is just a way of saying things, and remember we are comparing 2 quantities. Alrighty. Answer के लिए खैर मैंने जगह छोड़ दी, अब मैंने यहीं पे solve कर दिया. In an academy there are 8 boys to 10 girls. What is the ratio of boys to girls? 8/10 या 8:10. अच्छा. But 8 और 10 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, right? क्या है जी? 4 and 5. 4:5. क्यों? 2 से मैंने डिवाइड करा है. 2 4s are 8, 2 5s are 10. 4:5. So when I say that there are 8 boys to 10 girls, great. For every 4 boys, there are 5 girls. It's as simple as that. Because for every, अगर हर 4 लड़कों के लिए 5 लड़कियां हैं क्लास के अंदर कंपैरिजन में, तो जब ये डबल हो जाएंगे, it goes to 8. ये भी डबल हो जाएंगी बिकॉज पहली 4 के लिए 5 एंड देन दूसरे 4 के कंपैरिजन के लिए goes to 8. It is as simple as that. It is the same thing. Hopefully this funda is clear, and since this cannot get simplified further, this is the
बेस लेवल रेशियो। तो इसका जो स्टेटमेंट, इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम, फॉर एवरी 4 बॉयज इन अ क्लास there are 5 girls present in the same class. Great. So this is a comparison of the number of specific students belonging to a specific gender. All right. Then the ratio of people who answered all maths questions in DULLB to the total number of people who took the exam is 35 बड़ा 50. Okay. 35/40. Right. अब इसके अंदर क्या करना है? यही है आंसर में, तो यही हो गया 35:35। लेकिन ये दोनों 5 से कट रहे हैं, राइट? दे बिलोंग टू दी टेबल ऑफ 5। 35/50 काटो 5, 7/10। अच्छा, इसमें तो 7 से, जब यूजली अगर एक साइड पे 7 आ गया, यूजली अब वो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका रेशियो है। सो फॉर, अब इसके मैं अगर वर्ड स्टेटमेंट बनाऊं, so for every 7 students, for every 10 students who took the exam, 7 students attempted all maths questions in DULLB. That is what it's saying. The ratio of people who answered all maths questions in DULLB to the total number of people who took the exam is 35/50. For every 10 who took the exam, 7 attempted the maths ka section. That is what it is. And hopefully you also do. डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। They ask very very simple maths, and I don't want any of my students to leave maths just because उनको खौफ है कि अरे मैथ्स, अरे भाई साहब मैथ्स आ गई, फिर से मैथ्स आ गई। मैथ्स से जान छुड़ाने के लिए ही तो हमने काम करा था। Don't worry, hopefully ratios is clear. अगर किसी के सर के ऊपर से हल्का हल्का सा भी गया है, but if it is 70-80% clear कि what have I said, I repeat, comparison of two quantities, we go to unit rates in the next lecture. Alright, तो रेशियो का काम यहाँ पे बेसिक का step 1 is over. Now we are going to be tackling out all topics that are associated with ratios, and then let us even discuss some questions from past years so that you are very comfortable in solving all of this. Alright, now I see you in unit rate. Take care, bye.